We want to go across now, live and exclusive on India Today, all the way to Lahore in Pakistan. Joining us from there, heavyweight minister in the Imran Khan government, Railways Minister of Pakistan, and one of the most outspoken politicians in the country, Sheikh Rashid, now joins us live and exclusive on India Today. Mr. Rashid, welcome to India Today. At a time when relations between India and Pakistan have taken a nosedive, the Indian government led by its Prime Minister Narendra Modi making absolutely clear that there will be consequences for Pulwama, the Indian military has been given the green signal to strike at a time and place of its choosing and to punish Pakistan for the act of terror perpetrated from Pakistani soil. Mr. Rashid. Yes, both sides. The Indian Modi has given green signal to their armed forces, and our Prime Minister Imran Khan has yesterday addressed the main defense people and all the defense head of the forces, and he has also given the clear message and clear permission that if somebody is going to attack on you, then destroy them. शेख रशीद साहब, लेकिन इंडिया में बहुत मानना है सरकार का भी, लोगों का भी, कि लगातार जो आतंकी हमले हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं. हमने देखा कि इस पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने बाकायदा वीडियो जारी किया, जिसको डिनाई नहीं किया गया. मौलाना मसूद अजहर ने उसकी जिम्मेदारी भी ली, और ये मोहम्मद पाकिस्तान में बेस्ड है और आपकी सरजमी पे बेस्ड होते हुए ये हिंदुस्तान को आके बार बार टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है. रशीद साहब देखें, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है. किसी कीमत पर भी हम पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी की सोच नहीं सकते. और मैं वाजपेयी के दौर में भी मिनिस्टर था, और जब वाजपेयी साहब के दौर में एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट निकला और कश्मीर के इशू पर मुज़ाकरात की बात निकली, 70 सालों से हम मसला कश्मीर में उलझे हुए हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. सर, कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जमातुद दवा को बैन किया गया, फलाए इंसानियत पर पाबंदी लगाई गई, वो अब 26/11 के बाद आफ्टर 26/11 द पाकिस्तानी स्टेट डिड द सेम थिंग. आपकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है. जब हिंदुस्तान में हमला होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बनता है, तब पाकिस्तान फटाफट इन ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगा देता है. प्रेशर खत्म होता है, फिर जैश ए मोहम्मद, फिर लश्कर तायबा, हफीज सईद, जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, इनको पूरी छूट मिल जाती है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की. ऐसा क्यों होता है सर? देखें, इससे पहले हिंदुस्तान में सेकुलर क़यादतें थी, खा वो वाजपेयी की थी या इंदिरा गवर्नमेंट थी, और भुट्टो साहब ने भी, जुल्फकार अली भुट्टो ने कई दफा सूरन सिंह से एक दिन में 2-2 दफा मुज़ाकरात किए. So where did these RDX explosives come from? Dozens of kilos of RDX, they can't be assembled in in a normal garage. These were assembled in an explosives factory inside Pakistan, smuggled into India. Abdul Rashid Ghazi is an IED expert. He's an Afghan war veteran, and he was sent by Maulana Masood Azhar to India to train these Kashmiri boys. ये जो आप बारूद की बात कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की ISI द्वारा सप्लाई की गई बारूद है. ऐसे इतने दर्जनों किलो बारूद कहां से आएगी? जो बॉम्ब हैंडलर था जिसने पूरा उसको रेट्रोफिट किया इको कार को, वो भी अफगान वॉर वेटरन था जिसको जैश ए मोहम्मद ने भिजवाया. जैश ए मोहम्मद की पूरी मदद पाकिस्तान की आर्मी और ISI करती है. शेख रशीद, I have a reservation on your reply. Maulana Abdul Rashid Ghazi has a different approach, and he was fighting against the Pakistan armed forces. And in Lal Masjid, he killed so many army people and the SSG people, including a high-ranking officer of the colonel. And I must have to inform you that this young boy, who has blown his up and जिसने अपने आप को ये किया, even he don't never enter in Afghanistan. And Maulana Azhar, I don't know which year he left India from Indian prison in hijacking in some plane. I don't remember the date. But this is the misinformation, and I categorically can say that this is nothing to do with Maulana Abdul Rashid Ghazi. They fought against the Pakistan army at Lal Masjid and killed many
SSG people. So you are playing a different picture, but actually Maulana Abdur Rashid Ghazi has nothing to do with this kind of issues. اور انڈین جرنل نے یہ کہا ہے, میں نے خود پڑھا ہے پاکستان کے نیوز پیپر میں, کہ یہ بارود ہندوستان میں ہی سے لیا گیا, حاصل کیا گیا. آئی وش اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے کیا سوال کرنا ہے تو میں آپ کے اخبار کی وہ کٹنگ آپ کو پیش. سر ہمارے یہاں پہ کسی انڈین جنرل نے نہیں کہا ہے, ہم تمام جنرلز کا انٹرویو کر رہے ہیں. انفیکٹ ایک پاکستانی جنرل ہے جن کو شاید آپ جانتے ہوں گے, جو کہ ایک دور میں پاکستان کے راشٹرپتی بھی تھے. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف, جنرل پرویز مشرف. میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے دوران آپ کے پورو پریزیڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ جیش محمد اس اٹیک کے لیے ذمہ دار ہے اور وہاں کی سرکار کو کارروائی کرنی چاہیے. آپ اس سرکار کے ایک امپورٹنٹ منسٹر ہیں. میں آپ کو 1 منٹ آپ ہی کا پریزیڈنٹ سناتا ہوں. جنرل پرویز مشرف, آپ نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا ہے, آپ ایک بار ان کا 20 سیکنڈ کا بیان سن لیجئے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہی کے پریزیڈنٹ کے بارے میں. شیخ رشید. General Pervez Musharraf, Pakistan is asking India to provide evidence again. There is a certain sense of deja vu in the entire country. We've submitted evidence to you and to governments after you as well. Nothing came of it. It almost seems as if this attempt to seek evidence is only an attempt to buy time, and nothing will change even if India were to submit the evidence. Sitting where you are, General Musharraf, how are you viewing the current situation? Well, it is terrible. There is no doubt about it. And we regret and I condemn it. But however, let me also tell you that Jaish Muhammad and its leader is the one who attempted to kill me. There was a suicide attack on me which was carried out by Jaish Muhammad and this man, Maulana Azhar. So there is no sympathy that I will have for him. What action do you believe, General Musharraf, should the government of Pakistan and the Pakistani army take against the Jaish-e-Mohammed at this current juncture? I think, well, they could be banned, definitely. But let me tell you, we are talking to a person, you are talking to a person who has done 44 years of soldiering. I am not going to justify at all what happened to those people who got killed there. Not at all. And I condole their families, I regret it, and I condemn it. Sheikh Rashid, Pervez Musharraf sahab kehte hain, I condemn it, it's terrible. They attempted to kill me. انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی. ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. They should be banned. I cannot justify what happened. I condole the families that died. اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو آپ کے فارمر پریزیڈنٹ خود کہہ رہے ہیں شیخ رشید. Do you think this statement goes in your favor? Do you think a president of Pakistan with whom I worked as a Minister of Information also, he is saying that we are not with terrorists and these terrorists tried to attack on him, and he condemns this. So do you think that this goes in the favor of these bombing statement given by Modi, a shoot-off of RSS? Don't think that you have missed the time of the dialogue between Vajpayee and the Musharraf? He was the president, the army chief that time. That was the best opportunity. And what response at that time Modi was giving to Vajpayee sahab? So these all things shows there is something wrong. There is something wrong. There is something behind the curtain. And you are not what you are. This statement of President Musharraf goes in the favor of Pakistan and against the terrorist organizations. How you can show this statement in your favor? Sir, this shows our inside, but our inside is also this: we totally, fully support Kashmiri. Sir, we have supported in I want to show you pictures from Bhavalpur. We stand by with the Kashmiri. This is not a terrorist move. This is a independence movement. Sir, میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں بھاولپور کی. یہ سیٹلائٹ کے ذریعے انڈیا ٹوڈے گروپ کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اوپن سورس ٹیکنیکس استعمال کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے اکٹھا کی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیش محمد کا کمپاؤنڈ ہے وہ ڈبل سائز کا ہو رہا ہے. پہلے سے بڑا کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں, اس وقت بنا رہے ہیں. یہ ایک بینڈ گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی پارٹی نے, جیش محمد نے عمران خان کی کیمپین کو سپورٹ کیا. جس وقت پہ عمران خان پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے, جیش محمد نے مدد کی اور اس کا فائدہ انہیں مل رہا ہے.
ان کی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کی بجائے ان کو تو کھلی چھوٹ ہے نئے پاکستان میں. سر آپ دوستی کی بات کرتے ہو, ہندوستان میں لوگ دوستی چاہتے ہیں, لیکن آتنکواد کی اس فیکٹری کو کس طریقے سے آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, ان کی تو جو سپیس ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے. یہ بھی تو دیکھیے شیخ رشید, یہ کیوں نہیں دیکھتی آپ کی سرکار اور آپ؟ دیکھیں, آئی نو عمران خان, اور میں نے 7 سال قید کاٹی ہے شاہپور, ہری پور, بھاولپور میں. So I never met this man, Maulana Azhar Sahab, or I never heard about this. And I heard that Indian people want to have a surgical strike on this Bahawalpur and the Muridke. But you must be well aware of this. If there is any strike, surgical strike, there will be a full-fledged war. We have no other option. And there will be, it's not a tailor that you just come and hit, attack and run. No, we will not allow you. We want to live a peaceful neighbor, and we want the solution of Kashmir, and we want that India should realize that the present leadership of the India who lost it their 5 seats, 5 provinces, 5 riyasatein jo hain in the election, and now he again want to create, he born with these things. He is the baby of Hindudat. ہندوستان میں مائنورٹیز کی کنڈیشن, ہندوستان میں مائنورٹیز کی کنڈیشن پاکستان میں مائنورٹیز سے بہت بہتر ہے. سر آپ اپنے دیش میں اپنی مائنورٹیز کو تو دیکھیے, وہاں پہ آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں شیخ رشید, وہاں پہ انسرجنسی ہے فل فلیجڈ, آئے دن لوگ ہو رہے ہیں. Have you seen your Indian report on minorities? My dear friend, have you seen the reports of United Nations, United or different organizations, how you are behaving with your minorities? And I have seen the burning of Christians in Kolkata, and I have seen not only in occupied Kashmir or other in Jammu and so many other cities you are closing the shops. I have never think that India under the leadership of Modi will be such a emotional and semi-terrorist Hindus organization. شیخ رشید صاحب, آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ جیش محمد کے سرگنا مولانا مسعود اظہر نے سپورٹ کیا عمران خان کو ان کے الیکشن کیمپین کے دوران, اس کے ریٹرن تحفے کے طور پہ ان کو نئے پاکستان میں کھلی چھوٹ ہے اپنے ایریا کو ایکسپینڈ کرنے کی. عمران خان سر ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کو مولانا مسعود صاحب کہتے ہو. ایسی کیا مجبوری ہے کہ پاکستان ایک آتنکوادی کو صاحب بولتا ہے؟ سر مولانا مسعود کے کوئی مجبوری نہیں. عمران خان is a different man. Imran Khan never supported any terrorism, never ever, and he never joined hand with any organization. Or we have lost it the election in Bahawalpur, in Janubi Punjab, where they may have some hold. We have never joined, Imran Khan never joined hand with the Lashkar-e-Taiba. Imran Khan never joined hand with any religious group. I am his ally. I belong to Awami Muslim League. I was the only ally in election. Me and my nephew is from the same city, and my nephew contested on his sign bat. So give me any simple example that Imran Khan has. If this was my wish and desire, but he did not accept, I want and I have requested Imran Khan to let's join hand with the religious parties, with the religious group. We don't have such a tiny majority. If we have joined hand with the religious group, maybe we have a large scale majority which we don't have, because Imran Khan contested election independently only with one party, single hand man, Sheikh Rashid Ahmed and Imran Khan. I took his campaign all over the country. I can assure you there was a never single address in any election campaign. سر آپ ہی کی میڈیا, گلوبل میڈیا عمران خان کو طالبان خان کہتی ہے کہ انہوں نے ریڈیکلز کا سپورٹ لیا, فنڈامنٹلسٹ کی مدد سے پردھان منتری بنے. اور اس وقت آپ نے جو ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی, انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ونگ, ان کی جو زبان تھی, ان کی جو بھاشا تھی اور عمران خان کی جو بھاشا تھی وہ سیم تھی, ایگزیکٹلی دا سیم, شبد فار شبد, ورڈ فار ورڈ.
یعنی کہ جو پاکستانی آرمی بول رہی ہے وہی عمران خان بول رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان تو پاکستانی آرمی کے لیے پیرٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے سٹرنگز آرمی چیف چلاتے ہیں, کہ وہ تو پتلے ہیں. دیکھیں اب میری گزارش سنیں, آپ نے اتنی باتیں کہہ لی. امریکہ اینڈ ٹرمپ اینڈ زلمے ہیز ایڈمیٹڈ اینڈ ایکسپٹڈ کہ عمران خان واز رائٹ. عمران خان جو کہتا تھا کہ پٹھانوں سے بات کرو, وہ رائٹ, وہی بات عمران خان آپ کو کہتا ہے کشمیریوں سے بات کرو. سیم تھنگ عمران خان is saying, and we are proud that Pakistan army is in the support of the elected Prime Minister Imran Khan. اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر جن لوگوں کے ساتھ را اٹیچ ہوتی تھی اگر وہ ہمیں قابل قبول ہے تو کیا آپ کو عمران خان قابل قبول نہیں ہے کہ فوج جس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ Why don't you accept the Pakistan Army's this quality qualification? And he is the man chief of army staff, قمر جاوید باجوہ صاحب, جس نے جٹ کا جفا لگایا سندھو کو, اور تمہاری ساری فارن آفس جو ہے وہ جو ہے کسی ڈیسیژن کے قابل ہی نہیں تھی. کبھی یوں کر رہی تھی, کبھی وہ کر رہی تھی, کبھی چوں کر رہی تھی, کبھی چونکے چنانچے. ان دی اینڈ سکھوں نے جب یہ کہا کہ کرتارپور ہمارا جو ہے وہ ہمارے مذہب کا سب کچھ ہے, اور when they took a stand, اور الیکشن کے وہ لوگ جو جذبات سے ووٹ جیتنا چاہتے ہیں وہ گھبرا گئے کہ پنجاب میں سکھوں کا ووٹ ان کے خلاف جائے گا. Whatever Modi Sarkar is doing, he is doing only for the votes, and this can burn the even ballot box. At this you time, don't realize that Sheikh election Rashid, is for the consensus and for the... At this time, Sheikh Rashid, the United Nations Security Council has put out a resolution condemning in the strongest terms the heinous and cowardly attack by Pakistan-based Jaish-e-Mohammed in Pulwama, in which 40 CRPF Jawan were killed. The members of the Security Council condemned in the strongest terms the heinous and cowardly suicide bombing in Jammu and Kashmir, for which the Jaish-e-Mohammed has claimed responsibility. The members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible attacks of terrorism accountable and bring them to justice, and urged all states in accordance with their obligations. Suniye gaur se, Pakistan ke bare mein baat ho rahi hai. In accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions, to cooperate actively with the government of India and all other relevant authorities in this regard. یہ تو UNSC آپ کے لیے کہہ رہا ہے سر. ٹرمپ جو ہے وہ مودی کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. مودی جو ہے ٹرمپ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. ان مائی ہول پولیٹیکل ویژن 2 دفعہ مجھے امریکہ نے جہاز سے اتارا. آپ کہیں گے کہ میں ٹیررسٹ تھا, میں نے چھرے والی بندوق کبھی نہیں چلائی, اور اس لیے اتارا کہ آپ نے رپورٹیں دی کہ میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کا حامی ہوں, وہاں ہوں. I support the Kashmiris, I support the جدوجہد آزادی of Kashmiris. I believe that the only solution is that both countries should sit together. اور اگر آج ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ بات, وہ ٹرمپ عمران خان کو بھی خلیل زملے کو بھیج کے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک تھے. میں نے کبھی تصور میں سوچا نہیں تھا کہ انڈین حکومت امریکن پازیبیں اور گھنگرو پہنے گی. میں انڈیا کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا, ایک سیکولر انڈیا, ایک نان الائنڈ انڈیا, میں نے میری زندگی کی بہت بڑی سیاسی تبدیلی ہے. میں نے کبھی تصور میں نہیں سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹرمپ یا امریکن کی پالیسیوں کو ٹو کرے گا اور دنیا میں اس کے انفلوئنس ایجنٹ کا رول ادا کرے گا. سر پہلے تو پاکستان امریکہ کی جیب میں بیٹھا تھا, اب ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی ہے امریکہ سے, اور امریکہ پاکستان کو ہماری جگہ آپ بیٹھ گئے. ہلری کلنٹن نے کہا کہ that they have snakes in their backyard, that they rear snakes in their backyard, کی سانپ پالتا ہے پاکستان. قبول کرتا. سر جی یہ پہلا سوال ہے میرے دوست جس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ہم بہت عرصہ اس کی گود میں بیٹھے رہے, ہم نے جو چوپا ہے وہ آپ چوپ لیں. اب ہم نے جو اس سے فائدہ اٹھایا آپ اٹھا لیں. سر ہندوستان اس کا ذائقہ چکھ لیں جو ہم نے چوپا ہے. ہم نے جو کچھ کیا, آپ کو جو ایک دنیا میں شائن تھا کہ یو آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری, نو ایوری باڈی تھنکس یو آر اے انفلوئنس کنٹری. سر ایسا ہمارے بارے میں الزام تھا. شیخ رشید
अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, आप देखिए तो सही, इतने लंबे देशों की फहरिस्त है, सूची है, जो कि हिंदुस्तान के साथ खड़ा अकेला अमेरिका नहीं है। साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, जहां पे बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ है पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। इफ देयर इज एनी कंट्री दैट इज आइसोलेटेड, पाकिस्तान अकेला है। आपके पास दोस्त नहीं है हिंदुस्तान के साथ, तो पूरी दुनिया खड़ी है शेख रशीद। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है तो आपको मुबारक हो। सर, चीन आपका एक दोस्त था, चीन ने भी पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ बयान दे दिया। मैं पढ़ के सुनाता हूं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान। China notes reports on the suicide terror attacks and is deeply shocked by the attack. We express deep condolences and sympathies to the injured and the bereaved families. We firmly oppose and strongly condemn all manners of terrorism. We hope relevant regional countries will cooperate to cope with the threat of terrorism and jointly uphold regional peace and stability. चीन भी आपको बता रहा है शेख रशीद साहब की कार्रवाई कीजिए, हफीज सईद पे कार्रवाई कीजिए, मौलाना मसूद अजहर पे कार्रवाई कीजिए। इमरान खान के भी दस्तखत कर दें। मैं ऑन दी बिहाफ ऑफ, देखें ना इसमें मौलाना अजहर का नाम है, वो करे ना, जो आप जैसा पाए का साफी, आप जैसा चोटी का इंडिया टुडे और आज तक अगर वो बात करेगा जिसका उसमें जिक्र ही नहीं है, इस चीन के स्टेटमेंट के नीचे जॉइंट स्टेटमेंट कर दें, साइंड बाय इमरान खान आल्सो। आई एंडोर्स दिस एज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान, एज ए सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द कंट्री, और एज ए 8-time फेडरल मिनिस्टर इन पाकिस्तान, नोबडी इन दिस वर्ल्ड। मेरे दस्तखत भी इस चीन के बयान के साथ कर दो, शेख रशीद अहमद। Sheikh Rashid, India is not the only country alleging that Pakistan is sponsoring terrorism. 3 countries in your neighborhood are all leveling the same charge. Iran accuses Pakistan of helping the terrorists who attacked the Iranian Revolutionary Guards on the 13th of February. The Afghan CEO, the Afghan president constantly attacking Pakistan, accusing Pakistan of destabilizing Afghanistan. India levels the same charge. आप ही के नेता हैं फरहतुल्लाह बाबर, उन्होंने कहा अगर 3 पड़ोसी मुल्क सेम चार्ज लगा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी आईना देखना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि तीनों नेबरिंग कंट्रीज आपके ऊपर सेम एलिगेशन लगाते हैं। शेख रशीद, मैं 6 तारीख को ईरान जा रहा हूं और इंशाल्लाह इमरान खान का पैगाम लेके जाऊंगा और उनके ग्रेट लीडर से भी मिलूंगा। और ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम टेस्टेड फ्रेंड हैं, हमारी दोस्ती दोनों की हिमालय से बुलंद है। छोटी मोटी टुफ टख लगने का मतलब ये नहीं कि दोनों मुल्क की फौजें आमने सामने हैं। ईरान पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ है, हम ईरान की अहमियत से वाकिफ हैं। और अफगानिस्तान तो आप देखें ना, 50 लाख अफगानी तो अभी हमारे पास ही बैठा हुआ है, और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ ये इट मटक्का जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, टुक टक, ये 70 साल से लगी आई है और हम जो हैं कभी उसके फेवरेट हो जाते हैं। हमने वहां भी वही पॉलिसी रखी है जो आपको पैगाम दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म से पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी या कोई दहशतगर्द लॉन्च नहीं हो सकता। और हमने दहशतगर्द पकड़ के उनको दिए हैं, हमने अपने बच्चों को मरवाया है। पेशावर में सैकड़ों बच्चों को, अगर खुदा न खास्ता आपके इतने बच्चे शहीद हुए होते, आप तो बिल्कुल पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते। आपको मैं मोदी जी का बयान सुनाता हूं, फिर आपका बयान भी लूंगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने बहुत क्लियरली बताया है कि आप बोल लीजिए जो बोलना है, लेकिन बातचीत का टाइम खत्म। 1 मिनट आप हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनिए, फिर मैं आपका रिएक्शन देता हूं। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं।
बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। Sheikh Rashid, Pakistan has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. लेकिन अब हिंदुस्तान को लगता है कि इस टेरर के टैप को बंद करने का टाइम आ गया. इनफ इज इनफ. ये लगातार जो आपकी ISI आर्मी हमारे यहाँ आतंकवादी छोड़ती रहती है, इस पॉलिसी को खत्म करने का वक्त आ गया है. ऐसी फीलिंग इंडिया में हो रही है और यही इजाजत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आर्म फोर्सेस को दे दी. मेरी बात सुन लें, मोदी सरकार वोटों की भूखी सरकार अपने देश में वो आग जलाना चाहती है जिसमें सारा देश जल जाएगा. एक सबक तो हमने 2016 में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके भी किया था. तब तो आपकी आर्मी कुछ कर नहीं पाई. शेख रशीद, सो खुद भी अच्छे हमसाये की तरह रहो, हमें भी रहने दो. खुद भी एहसास करो कि वोटें आखिरी चीज नहीं होती. अच्छा सियासतदान जीता और हारता है. अच्छा सियासतदान सारी कौम को नहीं मरवा देता. इख्तदार के भूखों में ऐसा इजाफा मैंने नहीं देखा कि एक ऐसा अमेरिकन इन्फ्लुएंस एजेंट आए जो अपनी धरती को नेस्त नाबूद कराने के लिए वो बिला वजह हमें कहे कि आ बैल मुझे मार. पाकिस्तान पिछली दफा आधा हो गया था. 1971 की लड़ाई आपको याद होगी. 93,000 आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर. मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है. और शायद सारी चीजों का बदला लेने का वक्त आ गया है. ये सारा कर्जा उतार देंगे. आए आप. शेख रशीद, एक बार जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं. काफी बैंकरप्ट चल रही है आपकी इकोनॉमी. इमरान खान ने कैंपेन में कहा था कि बिल्कुल भी नवाज शरीफ गलती कर रहे हैं, बाहर जाते हैं टोकरा लेके, उनको नहीं करना चाहिए. वाई डज ही गो विद अ बेगिंग बोल. खुद प्राइम मिनिस्टर बने, अब वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, क्रिश्चियन लगार्ड से मिल रहे हैं IMF में. जरा अपनी इकोनॉमी की हालत तो देखिए, इंडिया से कंपेयर तो कीजिए. क्या बातें कर रहे हैं शेख रशीद आप? अपनी इकोनॉमी जो आपने शाइनिंग इंडिया रखा है ना, उसको बचा के रखें. इमरान खान तो दिन रात मेहनत कर रहा है. वो सऊदी अरब जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, वो मलेशिया जा रहा है, वो टर्की जा रहा है, क्योंकि 2 चोरों ने हमें लूटा. और वो चोर, एक आपका टाउट था नवाज शरीफ और दूसरा डाकू था असद जरदारी. सो अब आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आ गए हैं. आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं. आप कौम के हिंदू दत्त को, आप हिंदू मजहब को जब आप उजागर करने जा रहे हैं, हिंदुओं की वोटें लेने जा रहे हैं. मुसलमान मजबूर तो है कि शायद आपको वोट दे दे, लेकिन ये ना हो कि हिंदुस्तान के अंदर से कई पाकिस्तान बन जाएं और जहां जो मुसलमानों के इलाके हों. ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आपके मुल्क की, आपकी आर्मी की, आपकी सरकार की, आप हफीज सईद के खिलाफ, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कहते कि ठीक है, वी आर सीरियस अबाउट पीस, ये लीजिए हफीज सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर हैं. अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की. तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद. अब आइए बात करते हैं दोस्ती की. देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया. आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते कि ये भगवान की दिता की अरबता के लिए आपके चरणों में पेश करते हैं हाफिज सईद को. हाई कोर्ट ने उनको रहा किया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा किया. पाकिस्तान में जो टेरर फैक्ट्रीज हैं, जो आतंकवादी हैं, जो आपके यहाँ पे खुलेआम घूमते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए. ये तो बेस्ट ऑप्शन है ना, ये आप कर लें, फिर खूब कॉन्फिडेंस है. मोदी जी तो आए थे अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी को दांव पे रखते हुए के लिए तैयार. वो नवाज शरीफ से मिलने आए थे. सर, एक अच्छे पड़ोसी और हमसाये की हैसियत से हमसे बातचीत करें. आप वफा करें, हम वफा करेंगे. आप दगा करेंगे, हम दगा करेंगे. आप जंग करेंगे, हम जंग करेंगे. एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से मिलेंगे. इमरान खान ने कहा था आप 1 कदम बढ़ेंगे, हम 2 कदम बढ़ेंगे, बल्कि मैं कहता हूं हम 4 कदम बढ़ेंगे. लेकिन आप हमारा गड़ा खोदना चाहें तो हम आपकी करें, करा करें. एवरी डे इज नॉट संडे माई डियर ब्रदर, माई डियर फ्रेंड. ब्रदर तो नहीं कहना चाहिए सर. मैं काश आपको डियर फ्रेंड कह सकता. अगर शेख रशीद आप हमें मौलाना मसूद अजहर, हफीज सईद दे दे तो शायद दोस्ती हो भी सके. आप 1 कदम की बात कर रहे हैं, कुछ तो कदम उठाइए. आतंकवादी दीजिए, दोस्ती होगी क्यों नहीं होगी. आतंकवादियों को पनाह देंगे, फिर आप बोलेंगे कि दोस्ती कीजिए. ऐसे कैसे हो सकता है शेख रशीद? हम भी आपको एक लिस्ट दे देते हैं जिन लोगों को आपने इस मुल्क में दहशतगर्दी के लिए भेजा, जिनको लॉन्च किया सारे बलूचिस्तान में, KPK में. मेरा ख्याल है आएं और ठंडे दिल से सोचें और मसला कश्मीर पे बात करें. जिस तरह वाजपेयी और मुशर्रफ के दरमियान बात हुई थी, उस तरह मोदी और इमरान खान के दरमियान भी बात हो सकती है. I'm going to leave it over there. Sheikh Rashid, for joining us from Lahore.
You've said what you had to. We've had our disagreements. We leave it to our viewers and everyone watching in India and Pakistan to make what they will of this. Sheikh Rashid, one of the most important voices of the Imran Khan government, one of the senior most ministers in his cabinet, a very influential Pakistani politician, joining us on India Today with his thoughts on the current situation between India and Pakistan. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.